Hello students, the question is, a solid sphere of mass small m and radius small r is allowed to roll without slipping from the highest point of an inclined plane of length L and makes an angle 30 degree with the horizontal. The speed of the particle at the bottom of the plane is v1. If the angle of inclination is increased to 45 degree while keeping L constant, then the new speed of the sphere at the bottom of the plane is v2. The ratio of v1 square to v2 square is option 1, 1 is to root 2, option 2, 1 is to 3, option 3, 1 is to 2, and option 4, 1 is to root 3. So the problem is based on the topic conservation of energy and the rotational mechanics, basic concepts of rotational mechanics. So now let us draw the diagram for this particular problem. Then for the first condition, write the equation. So the situation is something like this. There is this inclined plane having a length of L. This is the length L. Suppose this height is h and this angle is theta. And the particle starts from this position and moves up to this position. Now let us solve this problem in the generalized manner first, assuming this angle to be theta, not giving the specific value at this particular point. So we can easily see that at the highest point when it starts its journey, then the potential energy is maximum, and the potential energy is given by mgh. Now h is related to this L and theta by this formula. Sin theta is basically h upon L, so we can say that h is equals to L sin theta. So we can write it as mg L sin theta. So this is the potential energy at the highest point, and at the lowest point it becomes 0 because h becomes 0. So this change in potential energy is converted into the kinetic energy. Now there are two components of kinetic energy. First one is the kinetic energy term is half mv square. This is the first term. Suppose the final velocity at this point is vf. So half mvf square. So this is the change in kinetic energy from between this point and this point. At the initial point the velocity is 0. That's why the initial kinetic energy is 0. Final kinetic energy is basically half mvf square plus the rotational kinetic energy, which is equal to half I omega square. This term is also present because of the rolling of this particular sphere. Now for a sphere, we know that the moment of inertia is given by 2 upon 5 mr square, where m is the mass of the sphere and r is the radius of the sphere. So putting this value of I in this equation, so half m vf square plus half into 2 by 5 mr square omega square. Now from the equations of mechanics, we know that v equals to r omega, or we can say that v square is equal to r square omega square. So in place of this r square omega square, we can put this value of v square. So vf square. So this becomes half m vf square plus this 2 cancels with this 2, and this becomes m v square upon 5. Now this is equal to m g L sin theta. Now this m cancels from both sides. We take common in the right hand side m and cancels with the left hand side. So the equation simplifies to GL sin theta is equal to half of VF square plus half plus 1 by 5 VF square. Now taking 10 as LCM of these two is 10. So this comes out to be 5 VF square plus 2 VF square. So this comes out to be 7 by 10 VF square. This is equal to GL sin theta. Now you can easily see that G is a constant, gravitation acceleration is a constant, L is constant according to the problem. We are changing the angle but not changing this L. So L is also constant. So in this way we can say that VF square is directly proportional to sin theta. Now there are two situations. In the first situation, theta is equal to 30 degrees. Theta is equal to 30 degrees. Theta 1 we can say it, and theta 2 is given as 45 degrees. So we can say that v1 square upon v2 square is equal to
sin 30 divided by sin 45. Now we know that sin 30 is 1 by 2 and sin 45 is 1 upon root 2. Now we can write this equation as root 2 upon 2. Now this 2 can be written as square root 2 into square root 2. So 1 square root 2 cancels and we get the answer as 1 upon root 2. So in this way we can say that option 1 is correct here. 1 is to square root 2. This is the ratio. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है रोटेशनल मैकेनिक्स और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने टर्म लिख दिया mgh, h के प्लेस पर हमने लिख दिया L sin थीटा। ये बराबर होगा द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के दो कंपोनेंट होंगे यहाँ, एक रोटेशनल और एक लीनियर कंपोनेंट होगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे हाफ m vf स्क्वायर। vf हमने यहाँ पे फाइनल स्पीड को माना है, जनरलाइज्ड हम केस लेके चल रहे हैं, बाद में हम वैल्यूज पुट करेंगे थीटा की दो अलग अलग सिचुएशंस के लिए, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये टर्म जो है रोटेशनल मोशन की वजह से आएगा। यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और सॉलिड स्फीयर के लिए हम जानते हैं इसकी वैल्यू 2/5 mr स्क्वायर के बराबर होती है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे हम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन एम वी एफ स्क्वायर के टर्म्स में आ जाती है। एम कॉमन लेंगे हम और कट करेंगे, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे 2 और 5 का। इस तरह से हम सॉल्व करके 7/10 वी एफ स्क्वायर। यहाँ से हम देखते हैं साफ साफ कि एल कांस्टेंट है, जी भी एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, लेंथ ऑफ द प्लेन कांस्टेंट एल जिसे हम कह रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वी एफ स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। दोनों सिचुएशंस के लिए हम एंगल की रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे साइन के लिए। तो साइन 30 और साइन 45 का रेशियो में फाइंड आउट करना है, जो कि निकल के आता है 1/√2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आता है। सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।